Hello children, we are learning pronouns and today we are on page number 29. So let us see. Read these sentences. Now we have to read these sentences. This book belongs to him. This book belongs to him. They want to play with me. They want to play with me. She made this painting for us. She made this painting for us. Now see, read with me. The highlighted words are used in the place of objects in the sentences. These highlighted words are used in the place of objects in the sentences. Pronouns that come in place of the object of a sentence are called object pronouns. Say again, the pronouns that come in place of the object of a sentence are called object pronouns. But first let us know about what is object. Object क्या होता है? The object in a sentence is the person or thing which is the receiver of the action. The object in a sentence is the person or thing which is the receiver of the action. Object क्या होता है? इट मे बी पर्सन और इट मे बी अ थिंग, कोई चीज या फिर कोई पर्सन जिस पर वो एक्शन हो रही होती है, दैट इज ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, दिस बुक बिलोंग्स टू हिम. दिस बुक मीन्स एनी बुक बिलोंग्स टू हिम. ये उसकी बुक है. बिलोंग्स टू हिम कि ये बुक उससे बिलोंग करती है. दे वॉन्ट टू प्ले विथ मी. दे मीन्स मोर देन वन पीपल वॉन्ट टू प्ले विथ मी, मेरे साथ. She made this painting for us. She made this painting for us. कि उसने ये पेंटिंग हमारे लिए बनाई है. us. That is the object. Now students see this table. Subject pronoun. Subject means जो एक्शन खुद कर रहा होता है हो, उसके लिए हम सब्जेक्ट प्रोनाउन ये यूज करते हैं. We use subject pronoun I, you, he, she, they, it. And for that object pronoun, for I, me. If it is object, it becomes me. You, same. Subject pronoun he and object pronoun him. This book belongs to him. She, for subject pronoun she, object pronoun is her. They, them. They, when we are talking about more than वन पर्सन, दैट टाइम यू यूज दे, वो लोग. और वो सब्जेक्ट में होते तो हम कहते हैं ना कि दे आर लुकिंग फॉर देयर वॉचमैन. दे इज अ सब्जेक्ट, मतलब वो खुद एक्शन कर रहे हैं. एंड देम मीन्स उन पर वो एक्शन हो रही होती है. देन इट सब्जेक्ट प्रोनाउन एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इज सेम. इट देयर इज नो चेंज. अगेन सी दिस टेबल. सब्जेक्ट प्रोनाउन. सब्जेक्ट मीन्स दोज हु आर डूइंग एक्शन. And we use these words as a subject pronoun. And object pronouns means receiver of the action, या फिर जिन पर action होती है वो. Okay. Now see on page number 30. Now we have to solve question 3. Fill in the blanks with correct object pronouns from the box. We have learned that object means the object in a sentence is the person or thing. क्या object कौन हो सकता है? Person भी हो सकता है, thing भी. विच इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन, मतलब वो उस पर वो एक्शन हो रही होती है. रिसीवर ऑफ द एक्शन. ओके. नाउ हियर आर सम ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस इन द बॉक्स एंड नाउ वी हैव टू यूज इट. द कुशन इज ऑन द सोफा. यू आर सिटिंग ऑन इट. हियर वी हैव रिटन इट. हाउ, कैसे? क्योंकि द कुशन इज ऑन द सोफा, सोफे पे कुशन है, एंड यू आर सिटिंग ऑन इट. It is used for non-living thing, and singular thing also. The cushion singular है, plus it is also non-living thing. So that's why the cushion is on the sofa. You are sitting on it. क्योंकि उस पर एक्शन हो रही है. So that's why you are sitting on it. Next is Preeti wanted to have an ice cream. Preeti wanted to have an ice cream. The waiter handed the cone to her.
प्रीति wanted to have an ice cream, उसे आइसक्रीम चाहिए. So the waiter handed the cone to her. Why we used her? Because for she subject Priti is a girl, and for girl we use which subject pronoun? She. But here उस पर एक्शन हो रही है. So the waiter handed cone to her because object pronoun is her. She subject pronoun and object pronoun is her. उसके लिए लड़की जब object pronoun में होगी मतलब उस पर वो एक्शन हो रही है. The waiter handed the cone to her. Okay. Next, mother bought apples. Before eating, wash them properly. Mother bought apples. Mother bought apples. Before eating, wash them properly. Why we use object pronoun them here? Because mother bought apples. Apples is a plural कि एक से ज़्यादा है. So before eating, wash them properly. Them means उन्हें अच्छे तरह से धो लो. Them properly. Okay. Ruben is good at maths. I will ask him for the answer. Ruben, name of a boy, is good at maths. I will ask him. हाँ यहाँ पे ऑब्जेक्ट मतलब रुबेन पे ही एक्शन होने वाले हैं. That's why I will ask him for the answer. Next, the Sarkars returned home. All the neighbors came to meet them. Here, Sarkar means the people who has authority, जिनके पास बहुत सारी बड़ी authority है, power है. For they are Sarkars. So the Sarkars returned home. All the neighbors came to meet them. Them सब्जेक्ट में होंगे तो they and object मतलब उन पर ही एक्शन हो रहे हैं, उनके लिए उनको मिलने के लिए आ रही है. So वो हो गए ऑब्जेक्ट. So them. Next, this is a lovely dress. From which store did you buy it? This is a lovely dress. ये lovely dress है. And from which store did you buy it? Dress singular thing है. For non-living thing we use it. And in subject pronoun also it is same. Object में भी it ही use होता है. There is no another change. So this is a lovely dress. From which store did you buy it? This is my notebook. I write important things in it. This is my notebook. अब ये notebook पर एक्शन होने वाली है. Which action? Writing. So this is my notebook. Full stop. I write important things in it. उसमें मैं important things लिखता हूँ. Last, excuse me, are you talking to me? Excuse me, are you talking to me? अभी excuse me कहा. Excuse me, one person is talking with another. Excuse me, are you talking to? So next action will happen on me. Next action मुझ पे होगी तो मैं हो गया object. So here are you talking to me? I का हो गया me. Okay. Students, read this table again so you can easily tell what is it. You can easily answer it. Next is identify whether the highlighted pronouns are subject pronouns or object pronouns. Subject pronouns means those who are doing action, and object pronouns means who is the receiver of the action. Subject pronouns means जो एक्शन करते हैं वो, and object pronouns means जिन पर वो एक्शन होती है वो. Understood? So we are coming to the party. Here first we is a subject क्योंकि वो एक्शन we are coming to the party, हम पार्टी में आ रहे हैं. So it is a subject pronoun. All the work was done by us. All the work was done by us means जो भी वर्क हमें दिया गया है उसे हमने कंप्लीट किया. वी हैव डन इट, क्या हमसे वो एक्शन हो गई, हम पर वो एक्शन हो गई, एंड वी हैव डन इट. सो इट इज अ ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. ऑल द वर्क वॉज डन बाय अस. आई डोंट एंजॉय लाउड म्यूजिक. आई डोंट एंजॉय लाउड म्यूजिक. आई इज अ सब्जेक्ट प्रोनाउन कि मैं लाउड म्यूजिक यूज नहीं एंजॉय नहीं करता. सो आई हियर इज अ सब्जेक्ट प्रोनाउन. Next,
द टीचर आस्क्ड देम नॉट टू वेस्ट फूड. द टीचर आस्क्ड देम नॉट टू वेस्ट फूड. आस्क्ड देम, हाँ, मतलब देम जो कोई लोग है उन पर एक्शन हो रही है. सो देम इज अ ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. OP. Next, Raza has told her about the competition. Raza has told her about the competition. So Raza is doing action on another person, which is her. वो किसी और कोई लड़की पे ये एक्शन होने वाली है, her. So that's why it is also a object pronoun. They will attend a yoga camp this weekend. Here they means doer of the action. वो खुद एक्शन कर रहे हैं. So they is a subject pronoun. They will attend a yoga camp this weekend. You must take your medicines on time. You must take your medicines on time. You मतलब भी किसी को ये एक्शन करने के लिए बोल रहे हो, उस पर वो एक्शन होने वाले है कि यू मस्ट टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम. सो जी इज इट इज अ सब्जेक्ट. यू मस्ट टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम. इट इज सब्जेक्ट प्रोनाउन, ये खुद ही लेनी पड़ेगी. यू मस्ट टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम. यू ये सब्जेक्ट हो गया, डूअर ऑफ द एक्शन. नेक्स्ट, Riddhi will help you with this assignment. Riddhi will help you with this assignment. यहाँ पे रिद्धि will help you, हाँ, रिद्धि will help you, आपको, हाँ, मतलब तुम्हें. So यहाँ पे you हो गया. He or she is the receiver of the action. ये जो you है वो उस पर वो एक्शन होगी. Which action? रिद्धि will help you with the assignment. Assignment help करने में रिद्धि मदद करेगी. सो यू जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया. सो दैट्स वाई हियर OP, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. अंडरस्टूड? स्टूडेंट्स, रीड दिस अगेन वेरी केयरफुली. व्हाट इज ऑब्जेक्ट प्रोनाउन? आई विल एक्सप्लेन अगेन. दिस बुक बिलोंग्स टू हिम, कि ये बुक उससे बिलोंग करता है. हिम. दे वॉन्ट टू प्ले विथ मी. दे वॉन्ट टू प्ले विथ मी, वो मेरे साथ खेलना चाहते हैं. She made this painting for us. हमारे लिए उसने ये पेंटिंग किए हैं. So and note what is object. Again see, the object in a sentence is the person or thing. Object in a sentence is a person or thing which is the receiver of the action. मतलब उस पर वह एक्शन हो रही होती है. That is the receiver of the option. Understood? Okay children, prepare. Read this table again carefully. What is subject pronoun? Subject pronouns is used in place of subject which is doing action, and object pronouns is a pronoun used who is the receiver of the action, कि जिस पर एक्शन होती है, that is object pronoun. Okay.